अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, इससे आपको पॉलिटी का भी कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, और इससे आपको यू विल आल्सो अंडरस्टैंड ऑब्वियसली हाउ द लॉज आर स्ट्रक्चर्ड एंड मेड इन इंडिया। आफ्टर द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, railways was the key way to have armies move throughout the country and to have economic exploitation of India take place. In this background and context comes the 42nd Constitutional Amendment Act. अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, इससे आपको पॉलिटी का भी कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, और इससे आपको यू विल आल्सो अंडरस्टैंड ऑब्वियसली हाउ द लॉज आर स्ट्रक्चर्ड एंड मेड इन इंडिया। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे रफ में नोट करते जाना, आगे के लिए भी आपको ये हमेशा याद रखना है। देखो, आफ्टर द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, first war of independence, once it concluded, the British had a firm grip over India, and now they decided, because they had seen the war happen, now they decided that we need to crush any sort of rebellion that needs to take place. To crush any sort of rebellion that needs to take place, the most important thing that the British needed was a communication system throughout the country. Communication, not communication through phones, but movement of people, so that they could move their armies quickly, and they needed a bigger army. यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, डिवाइड, यूरोपियनाइज एंड काउंटरपॉइज, राइट? आई होप आपको ये याद हो। इस चीज को डेवलप करने के लिए दे थॉट दैट वी नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव ट्रेन नेटवर्क इन इंडिया। तो उन्होंने सोचा दैट इफ वी हैव एन एक्सटेंसिव रेलवेज नेटवर्क, we can use these railways not only to then control the country through troop movements, but also use it for export. From military exploitation, they shifted mostly to economic exploitation. Railways was the key way to have armies move throughout the country and to have economic exploitation of India take place. इसके लिए इन्होंने क्या किया? रेलवेज बिल्ड करने के लिए हमें ट्रैक्स ले करने थे, और ट्रैक्स ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टिम्बर। Timber was needed. इनको British were simply exploiters. They were looters of India, and their job was, उन्होंने सोचा यार हमें timber चाहिए maximum level का। Timber was there in the forest. Now once they went to Indian forest, they realized that the situation in Indian forest was such that there were traditional communities living there. Right? जो traditional communities थी वो यहाँ पर जी रही हैं, and they are living in harmony with nature. Right? So they had twofold objectives. One, eliminate this traditional community from the forest. इस community को हमने eliminate करना है, and then try and extract as much timber as possible. Right? So try and extract as much timber as possible from the forest and eliminate these traditional communities, or sideline, eliminate, not kill, but sideline these traditional communities. अगर वो इन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को अपने नॉर्मल मेन स्ट्रीम वे ऑफ लाइफ में ले आते तो उन पे कंट्रोल भी ज्यादा कर सकते थे, राइट? दे वांटेड ऑल इंडियंस टू ग्रो रॉ मटेरियल्स. दे डिसाइडेड दैट वी वांट टू शिफ्ट दीज ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू द मेन स्ट्रीम वे ऑफ लाइफ एंड एक्सट्रैक्ट एज मच टिम्बर एज पॉसिबल फ्रॉम द फॉरेस्ट. दिस वाज द ब्रिटिश आइडियोलॉजी ऑफ द टाइम. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर लॉज पास करने शुरू किए. So we saw various laws being passed in 1850s. इससे पहले ही शुरू हो गया था. It intensified after this. Most famous act was in 1878. Laws and policies, then one came in 1894. इन सारी laws और policies का एक ही objective था. The objective was get as much timber as possible. Now first let us consider how these traditional communities live. इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ. हम में से बहुत लोग, we'll come back to this. हम में से बहुत लोगों को लगता है यार ये ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्यों है, राइट? अगर आप, हमने कई बार पढ़ा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि यार माइनिंग होनी होती है ट्राइबल एरियाज में तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, नक्सलिज्म की भी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में. तो हमें लगता है यार इन लोगों को, व्हाई डोंट वी गिव देम, द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, व्हाई डोंट वी गिव देम गुड लैंड, व्हाई डोंट वी गिव देम गुड हाउसेज, एंड उनको कहते हैं यार आप आके अच्छे घरों में रहो, उन्हें अच्छे से रिहेबिलिटेट कर दो और उनके एरियाज में फिर माइनिंग कर लो, राइट? I'm sure this thought must have come to your mind, yes or no? At least once this thought must have come to your mind कि यार इसमें क्या ही दिक्कत है. ये थॉट आपके दिमाग में आया होगा कि यार अच्छे घर दे दो. If you give them good land, it's not a problem. अब मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या. एक आपको एग्जांपल देता हूं. There is a tribal community called the Birhor and a tribal community called the Chenchu who live in India.
ये सेम आइडिया लिया गया कि यार इनके लैंड्स पे हमें माइनिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस गिव देम गुड लैंड्स, इनको अच्छा फार्म लैंड दे देते हैं, फर्टाइल लैंड दे देते हैं, we'll give them fertile land, we'll give them houses, we'll give them seeds and we'll give them a plow, और कहेंगे यार आप आराम से अपनी फार्मिंग कर लो यहां पर, एंड लेट अस डू माइनिंग ऑन योर लैंड। हुआ क्या, all these things were given to them, the Berhor used the plow for firewood, इसको जला के इसे फायरवुड के लिए यूज कर लिया, they ate the seed, they refused to live inside the houses because they were fearful that the roof will fall on their head. Why? Because they are traditionally hunting gathering communities and they treat Mother Earth as God. Deep ecology से connect करना, it is for them against their religious beliefs to plow the earth. If they plow the earth, they would actually be violating what they consider as the supernatural, what they consider as the almighty. अब आपको लगेगा यार ये houses को इन्हें लग रहा है तो roof will fall on their head. What sort of superstitious people are these? हम सब superstitious हैं to a level, right? ऐसे अगर देखा जाए तो हम थ्रू मतलब पूरे साल में एक ऐसा कोई ना कोई फेस्टिवल तो मनाते ही हैं जो एक आउटसाइडर को लगेगा कि यार ये क्या सेंस है, जस्ट बिकॉज माई सिस्टर इज टाइंग अ स्ट्रिंग ऑन माई हैंड डज दैट मीन आई एम मोर कनेक्टेड टू हर। कोई बाहर वाला ये बात कह सकता है, वो तो मुझे पता है ना रक्षाबंधन की क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ इट इज एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर माई सिस्टर। आई डोंट हैव अ डायरेक्ट सिबलिंग बट फॉर माई कजन सिस्टर फॉर एग्जाम्पल, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एवरी टाइम गो फॉर दैट फेस्टिवल, बट किसी बाहर वाले को तो ये सुपरस्टिशन लग सकता है। तो ऐसे ही इनके बिलीफ्स को हमने सुपरस्टिशन समझा, अपने बिलीफ्स को समझा बिलीफ्स, इनके बिलीफ्स को समझा सुपरस्टिशंस। वी डोंट डू दिस नाउ, इंडिया हैज सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम नाउ, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट काइंड कंट्रीज टू ट्रेडिशनल डेवलपिंग कम्युनिटीज। बट अगर आप यूएसए में देखो, अगर आप ब्रिटिश का एटीट्यूड देखो तो ऐसा था, तो ये चीज इनको दी गई, डिस्पाइट दिस देयर वाज नो इंप्रूवमेंट, उन्होंने मना कर दिया एंड दे सेड कि यार हम तो ऐसे नहीं रह सकते, बिकॉज ट्रेडिशनली हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी, जो ट्राइबल लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, नॉट ओनली इन हार्मनी विद नेचर इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा बिकॉज नेचर इज गिविंग अस सर्विसेज वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, दे आर नॉट शैलो इकोलॉजिस्ट लाइक अस, दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डीप इकोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, राइट, फॉर देम man is in harmony with nature and the spirits of nature, they consider nature as god। हमें भी लगेगा अगर हमारी किसी रिलीजियस प्लेस में कोई कहे कि यार यहाँ पर आप आपकी रिलीजियस प्लेस है इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हमें माइनिंग करनी है, हमें माइनिंग कर लेते हैं, राइट, आप अपना रिलीजियस प्लेस कहीं और बना लो, तो वी विल ऑल्सो फील बैड, वी विल ऑल्सो फील ऑफेंडेड। सेम थिंग वी हैव डन टू द ट्राइबल्स बाय सेइंग कि यार आप अच्छा कहीं और रह लो। तो इट इज नॉट एन इशू ऑफ डेवलपमेंट, इट इज एन इशू ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ। दिस वे ऑफ लाइफ इंडिया हैज अंडरस्टूड, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उससे हमने ब्यूटिफुली इस वे ऑफ लाइफ को समझा है, बट द ब्रिटिश वर लूटर्स, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर वेरियस लॉज पास करके दे स्टार्टेड एक्सक्लूडिंग द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स वर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि ब्रिटिश वर ट्रीटिंग देम एज पीपल हु आर हु आर सुपरस्टिशियस, कहते क्या इनको मेन स्ट्रीम में लाओ एंड वी कैन इवन कंट्रोल देम मोर, एंड हमें फॉरेस्ट से हमें टिम्बर भी मिल रहा है। इसलिए दिस इज द टाइम व्हेन समबडी विल ट्राई टू excoriate our way of life, when somebody will try to interfere with our way of life, we would also protest. You would see at this time that majority of tribal revolutions that we have read in modern history are happening at this time, because British are constantly excluding them from the forest. When British occupation is increasing in India, after all of these laws that have come, the British passed an act in 1927 with the same mindset called Indian Forest Act. They say that forests are national wealth, right? Wealth of the nation. So we will designate forest, एक के बाद एक rebellion होता जा रहा है. British now want to find a solution because they see that their control from India is evaporating. They now want to find a solution कि यार हमें timber तो चाहिए ही, तो क्या करते हैं, हम forest को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, right? हम कहते हैं कुछ फॉरेस्ट होंगे रिजर्व फॉरेस्ट, सोनली द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश,
कुछ फॉरेस्ट होंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बीच के प्रोटेक्शन तो रहेगी बट हाँ हम ट्राइबल कम्युनिटीज को भी अलाउ कर देंगे. एंड द फॉरेस्ट विच हैव द लीस्ट टिम्बर दैट द ब्रिटिश डोंट वांट, दे डेजिग्नेट देम एज विलेज फॉरेस्ट. कि अच्छा तो विलेज फॉरेस्ट है, ये आपने जो इसमें करना है कर लो. Now you understand the change that happened in the tribal lifestyle at this time. From something which was their exclusive way, way of life. अगर हम इससे पहले का पार्ट देखें, यहाँ तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी ही फॉरेस्ट को चला रही थी. फ्रॉम समथिंग दैट वाज देयर वे ऑफ लाइफ, जैसे माय वे ऑफ लाइफ इज टीचिंग. अब कोई लॉ बना के मुझे बोले कि आप ये पढ़ा सकते हो, ये नहीं पढ़ा सकते. यू कैन टीच इकोनॉमी, यू कांट टीच पॉलिटी. यू कैन टीच एंथ्रोपोलॉजी बट यू कांट टीच पॉलिटिकल साइंस. तो मैं कहूंगा यार ये क्या मतलब है. तो इट इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एट दिस टाइम दैट the way of life of tribals, जो उनका way of life था, that became limited by simple or small amounts of rights and privileges. जो rights and privileges हमें मिलते हैं, right? ऐसे बोला कि ब्रिटिश हम आपको right दे रहे हैं, हम आपको privilege दे रहे हैं कि आप फॉरेस्ट में रह सको. But this was not okay from the tribals point of view because ये तो उनका way of life है, right? They passed the Indian Forest Act in 1927. अब इसके बाद क्या होता है? We gain independence in 1947. Now the tribal populations were very expectant that something good is going to happen at this time. Something good is going to happen at this time. British, have gone from the country and we are going to now have a country where our rights in the forest are also going to be recognized. हमें लग रहा है कि यार ये ट्राइबल्स दे आर परफॉर्मिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये लोग तो फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करते. फॉरेस्ट नीड टू बी कंजर्व फॉर नेशनल वेल्थ. तो इस टाइम पे क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट एट दिस टाइम कंटिन्यूज विद द सेम माइंडसेट. इन 1953 अ फॉरेस्ट पॉलिसी कम्स, सेम माइंडसेट. आज भी ये एक्ट रिजर्व प्रोटेक्टर और विलेज फॉरेस्ट की, इट इज इन ऑपरेशन. इवन टुडे दिस लॉ एग्जिस्ट, एज ऑब्वियसली इट हैज बीन अमेंडेड, बट द आइडिया डिड नॉट चेंज. So in 1953, sorry, not in 1957, in 1953, another law comes, or actually a policy comes, and we say that, okay, we will conserve the forests, right? Forests are national wealth for the nation's growth, etc. And why slash and burn का primitive idea लेके tribal way of life को ना समझते हुए we continue on the same path. इस time पे tribal leaders in the Constituent Assembly said, and this is a very well documented line, what is for us in your development. आप अपनी लाइन में डेवलपमेंट सोच रहे हो कि हम नेशन को ऐसा बना देंगे, बड़ा कर देंगे वगैरह वगैरह, बट हमारे लिए क्या है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर वे ऑफ लाइफ आल्सो. दिस सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन कंटिन्यूज. एंड इन 1960s, then in 1967, police in West Bengal fire in Naxalbari on a tribal uprising, and this is where the Naxal movement starts. This is also one of the reasons. Our mismanagement of forest policies is also one of the reasons for Naxalism in India. फिर ये चलता रहता है. अब हम देख क्या रहे हैं, हमने तो सोचा यार हमें अब इंडियन गवर्नमेंट की, नई इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है. द ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, दैट वी हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वी हैव टू यूज इट फॉर डेवलपमेंट. हमें चाहिए कि हमें 33% फॉरेस्ट कवर चाहिए इंडिया में, है ना. इसी माइंडसेट से हम चल रहे हैं, राइट. ये होते होते ये ऐसे टाइमलाइन आगे जाती है. 1980s में हम क्या देखते हैं, जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर 1947 में था और जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर 1980s में है, इन 1980s आवर फॉरेस्ट कवर हैज एक्चुअली डिक्लाइंड. फॉरेस्ट कवर हमारा कम हो गया 1980. सो देयर इज डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट इन दिस टाइम. तो किसी को समझ नहीं आता यार क्या हो रहा है. वी आर एक्सक्लूडिंग ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, फिर भी हमारा फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ जा रहा है. स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वी आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देम. तो 1980s में एक नया लॉ आता है. We say, yaar, we need to protect the forests. Let's make a law called Forest Conservation Act. Forest Conservation Act बनाई जाती है 1980s में. 1980s में Forest Conservation Act क्या सोच के बनाई जाती है, that we will say that forest land, और अभी ये सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे सारे एक्ट्स में, forest land will not be used for non-forest purposes. Forest land will not be diverted. ना हम फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करेंगे, ना उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करने देंगे. वी वांट टू कंजर्व फॉरेस्ट. अब इसके बीच में अनदर सेमिनल इवेंट हैपेंस इन 1972.
Here in 1972, another seminal event happens. In 1972, there is the UN Conference on Human Environment. 1966 में Rachel Carson writes her book Silent Spring. Here, UN Conference on Human Environment happens, and we are starting to now think that protecting the environment is very, very important. ये UN Conference on Human Environment कहाँ होती है? This UN Conference, I'll come back to this. UN Conference on Human Environment happens in Stockholm, known as the Stockholm Summit. Now, Stockholm is in Sweden. तो स्टॉकहोम में अगर स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हो रही है तो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे ही. अदर देन स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर, द ओनली पर्सन हु इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस इज श्रीमती इंदिरा गांधी. सो ओनली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर and the Swedish Prime Minister are the two heads of government who are present here. Everybody else is present, but not head of government level representation is there. इस time पे there is now a sea change in Indian thinking on environment. We start thinking in 1972 that we have to conserve the environment. In this background and context comes the 42nd Constitutional Amendment Act. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है उसमें आप देखो, जो हमें पॉलिटी में पढ़ते हैं, बट लुक एट द चेंजेस दैट हैपन. आर्टिकल 48A गेट्स इंट्रोड्यूस्ड, नॉट एट दिस टाइम बट आल्सो, सिर्फ इन्हीं चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूं, थ्रू आउट द प्रोसेस लुक एट द चेंजेस दैट आर हैपनिंग. 48A इज हैपनिंग, राइट, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट. देन 1974 में वी मेक द वाटर एक्ट. इसी बैकग्राउंड में कि वाटर पोल्यूशन रोकना है, एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट. अंडर द वाटर एक्ट वी मेक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वी मेक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इसी टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आता है. इसमें हम एक क्लॉज डालते हैं 51A क्लॉज G. व्हाट इज द क्लॉज? प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. एंड इट इज एट दिस टाइम दैट वाइल्ड लाइफ इज शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट. इससे पहले वाइल्ड लाइफ इज इन द स्टेट लिस्ट. But Srimati Indira Gandhi says, no, it is not only the responsibilities of the state. ये बहुत बड़ा issue है, इसे concurrent list में shift करो. When you shift a topic from state list to concurrent list, people who are managing this, people who are going to manage wildlife now, have to be responsible to both center and states. This is the time when the Indian Forest Service becomes All India Service. ठीक है. नाउ दिस 1972 सेमिनल इवेंट ऑन स्टॉकहोम कन्वेंशन यहां पर होता है. यहां पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपन. इंडिया इज नाउ थिंकिंग अ लॉट ऑन द लाइंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, राइट. बट अभी भी हमारा एटीट्यूड क्या है? वी विल कंजर्व द फॉरेस्ट. यही एटीट्यूड है. 1980s में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आते हैं, सेम एटीट्यूड, वी विल कंजर्व द फॉरेस्ट. ठीक है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गई. फॉरेस्ट लैंड विल नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस. फॉरेस्ट लैंड विल नॉट बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज. ये दोनों चीजें आने के बाद भी इंडिया की फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट कवर है वो कम नहीं होता, वो बढ़ता नहीं है. इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. स्टिल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. स्टिल द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड. अब नाउ कम्स अ ब्रिलियंट मैन इन 1988 who for the first time understands what the problem is. He says कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट के साथ रह रही थी, they are not primitive people. Actually, they are deep ecologists. They follow the idea of sacred groves. They worship nature. अगर आप इनको इन्वॉल्व करोगे in, if you involve these people in forest management, then only you will be able to conserve your forests, right? So 1988 में नई फॉरेस्ट पॉलिसी आती है. There is a person called B.K. Roy Burman, who is the architect of this new forest policy. And B.K. Roy Burman जी क्या कहते हैं? Please involve local communities in forest management. First time idea of joint forest management comes up. That forest will be managed jointly by forest bureaucracy as well as local people. Joint forest management is successful. Sacred groves is there. Joint patrolling of forest is there. The timeline goes further. In further timeline we realize that यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. This is such a good idea. We have to involve local community. But अब जब हम protected areas पढ़ रहे थे, what did we read? The conflict was also this.
ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करनी, और एक तरफ आप कह रहे हो कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, तो आवर फॉरेस्ट मैनेजमेंट विल बिकम बेटर. नाउ इन दिस केस वी नीड अ beautiful midway legislation, which is, I think, India's one of the best legislations that has ever been drafted in India to save the rights of the tribals and to undo all the historical injustices that have been done on them. So in 2006, finally, another law comes up known as Forest Rights Act. In Forest Rights Act, now we say that we will grant rights to tribals who have been traditionally living in the forests. We will give them also responsibilities of conserving the forest, and through a joint consultative process, of tribal communities and government, we will now manage the forests. एंड यहां इंडिया ने ये सारे 1857 के बाद जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स करेक्ट हुए थे, 150 साल बाद हमने वो करेक्ट किए इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. इज द इंटायर. अब आप कोई भी लॉ पढ़ लो, अगर मैं आपको ना भी पढ़ाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि हर लॉ किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. इज इट नाउ क्लियर? नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर पैटर्न, अब जब हमने ये पूरा पैटर्न समझ लिया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस लॉज. इट इज ऑल्सो इन 1972, इसी सेम टाइम पे, even the Wildlife Protection Act comes. It is Wildlife Protection Act 1972, same background and context.